Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today we are going to do chapter number 17 from Langman's Embryology, which is to discuss the embryology of head and neck region, which is a difficult topic for many students और मुझे बहुत सारे student request कर रहे हैं कि सर systemic embryology में please ये chapter पहले करवा दीजिए. तो here it comes. Now the mesenchyme for the formation of head region is derived from, obviously the head region will be formed by different structures, and the mesenchyme, which is the primary cellular architecture which will form the head structures, और ये drive होता है basically from the paraxial and the lateral plate mesoderm, the neural crest cells and the thickened regions of the ectoderm, which are called the ectodermal placoids. So basically अगर आपसे पूछें कि head region की formation के लिए जो mesenchyme use होती है उसमें कौन कौन से parts का contribution है, so there is a contribution from mesoderm, और ये mesoderm की दो different types हम already पिछले videos में कर चुके हैं. तो अगर आप मेरी general embryology की videos देख रहे हैं तो आपको पता है कि what is paraxial mesoderm, what is lateral plate mesoderm. So both these mesodermal structures, they contribute towards the mesenchyme which then forms the head. तो एक तो ये lateral और paraxial mesoderm support कर रहे हैं, दूसरा neural crest cell support कर रहे हैं, and then the ectodermal ridges which are the ectodermal placoids. So ectoderm भी contribute कर रहा है, mesoderm भी contribute कर रहा है, and the neural crest also. Okay. अब हर एक से in the introductory paragraph they have discussed कि paraxial mesoderm से कौन कौन से structures develop होते हैं, फिर lateral plate mesoderm से कौन कौन से structures develop, ये आपको पता होना चाहिए. So paraxial mesoderm forms a large portion of the membranous and the cartilaginous component of the neurocranium, which is the skull. So the paraxial mesoderm is the main contributor to the skull formation. All the voluntary muscles of the craniofacial region, so जितने भी आपके voluntary muscles हैं facial region में, also in the cranium, the dermis as well as the connective tissues in the dorsal region of the head. So it's a pretty big distribution from the paraxial mesoderm, and then the the meninges caudal to the prosencephalon as well. So meninges as well, not only the bones and the muscles and the connective tissue but also the meninges. And the lateral plate mesoderm forms the laryngeal cartilages, और कौन कौन से, arytenoid and cricoid, and the connective tissue in this region. फिर neural crest तीसरा contributor था. देखें ये contributors पहले यहाँ इन्होंने बता दिए कि there is number 1 paraxial mesoderm, number 2 lateral plate mesoderm, number 3 neural crest. So we discussed कि paraxial से क्या क्या बनता है, lateral plate से क्या क्या बनता है, अब neural crest से क्या क्या बनता है. Neural cells originate in the neuroectoderm of the forebrain, midbrain and hindbrain regions and migrate ventrally into the pharyngeal arches. ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा what are pharyngeal arches, and rostrally around the forebrain and optic cup into the facial region. In these locations जो अभी हमने सारी बात की है, forebrain, midbrain, hindbrain और pharyngeal arches, in these locations they form, यहाँ पे they किसके लिए word use किया है, they means the neural crest cells, ठीक है, they form entire viscerocranium, which is an important component of your face, and parts of the membranous and cartilaginous regions of the neurocranium. So skull की formation में not only the paraxial mesoderm is contributing but also the neural crest cells are contributing. They also form all other tissues in this region including cartilage, bone, dentin, tendon, dermis, pia mater, arachnoid, sensory. So ये तमाम forebrain, midbrain, इसके इर्द गिर्द जितना तो neural crest cells. Okay, and then the fourth contributor was the ectodermal placoid. Together with the neural crest cells from the neurons of 5th, 7th, 9th and 10th cranial sensory ganglia. So ये जो introductory paragraph है ये बड़ा important है. So if I ask you up front कि जनाब ये head की development में जो mesenchyme है उसमें कौन कौन contribute करता है, तो 4 structures हैं जो आपको मुझे जवाब देने चाहिए, और वो 4 structures क्या क्या हैं. Number 1 the paraxial mesoderm, number 2 lateral plate mesoderm, number 3 neural crest cells and number 4 ectodermal placoids. और फिर इनमें से हर एक क्या क्या part contribute करता है is all written there. Okay. ये टेबल जो है ना, दिस इज़ अ 5 स्टार टेबल. एक्चुअली मैं बना ही देता हूँ 5 स्टार, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ 5 स्टार है, क्योंकि अगर आपको हेड रीजन में एम्ब्रियोलॉजी में ये टेबल नहीं समझ में आया कि कौन सी फेरेंजियल आर्चेस होती हैं हमारी बॉडी में, और फिर उन फेरेंजियल आर्चेस की नर्व सप्लाई क्या है, उनसे मसल्स कौन से डेवलप होते हैं, और स्केलेटन का कौन सा पार्ट डेवलप होता है. सो दैट्स अ 5 स्टार टेबल, मस्ट नो फॉर योर एम्ब्रियोलॉजी स्टफ. ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर अभी हम आएंगे, थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं. पहले थोड़ा टेक्स्ट पढ़ा दूँ
जब हम डिटेल टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो फिर ये समरी मैं आपको समझा दूंगा कि हाउ टू रीड एंड अप्रोच दिस टेबल। अब हेड एंड नेक की जो डेवलपमेंट है उसमें एक सुपरस्टार स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज द फेरिंजियल आर्चेस। दीज फेरिंजियल आर्चेस वर प्रीवियसली एक्चुअली नोन एज द ब्रैंकियल आर्चेस बिकॉज इनकी सिमिलैरिटी है गिल्स के साथ। अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब इंसान डेवलप हो रहा होता है तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरह के, इट एक्चुअली लुक्स लाइक गिल्स ऑफ फिश, जैसे कि फिश में गिल्स डेवलप होते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये बात ठीक नहीं है। ये दिखने में मॉर्फोलॉजिकली तो दे अपीयर लाइक गिल्स, but actually they are not like gills. They are totally a different structure as compared to the gills present in fish. इसीलिए अब इसका नाम हम ब्रैंकियल आर्च रखते भी नहीं है। Now they are separately known as, individually known as, with a designated name, pharyngeal arches. अभी जो फेरिंजियल आर्चेज है ना, ये बेसिकली हैं क्या, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी में इस तरह से डेजिग्नेट कर दिया है कि जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है उससे ये चीज़ें बनेंगी, सेकंड फेरिंजियल आर्च से ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, अब ये जो फेरिंजियल आर्चेज हैं दे अपीयर इन 4th and 5th वीक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द एम्ब्रियो। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, दिस कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस, दीज आर द, सो ये टिश्यू का आउटग्रोथ जो है, दीज आर कॉल्ड फेरिंजियल आर्चेस। सो ये टिपिकल अपीयरेंस होती है कि नेक रीजन के पास इस तरह से यू स्टार्ट सीइंग द फेरिंजियल आर्चेस ऑन द वेंट्रोलेटरल सरफेस। इनिशियली दे कंसिस्ट ऑफ बार्स ऑफ mesenchymal tissue separated by clefts and these clefts are known as pharyngeal clefts। देखें, अब इसको समझने की कोशिश करें। आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि जो pharyngeal arches हैं वो एक्चुअली उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। सो इट्स नथिंग बट द mesenchymal tissue। सो इसके बीच में अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर क्या है, सो दैट इज द mesenchymal tissue। अब ये mesenchymal tissue हमें पता है कि हेड एंड नेक रीजन में कॉन्ट्रीब्यूट होता है फ्रॉम द लेटरल प्लेट मेसोडर्म, फ्रॉम द paraxial mesoderm, from neural crest cells, और तो दिस इज ऑल द mesenchymal tissue। और इन mesenchymal tissues के जो ग्रुप्स हैं, सो एक ग्रुप कहलाएगा एक pharyngeal arch। It will be composed of designated set of mesenchymal tissue। अब जब मल्टीपल pharyngeal arches बनती हैं तो इनके बीच में ऐसे देखो, एक pharyngeal arch है, ये दूसरी pharyngeal arch है, तो ये बीच में cleft बन गया। This is known as pharyngeal cleft। तो दैट इज एज सिंपल एज दिस। ओके, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 फेरिंजियल आर्चेस बनाई हैं, आर्च 1, आर्च 2, आर्च 3 एंड आर्च 4, तो मेरे पास कितने फेरिंजियल क्लेफ्ट्स बन गए? 3। एक फेरिंजियल क्लेफ्ट इधर बन गया, दूसरा फेरिंजियल क्लेफ्ट इधर बन गया, और तीसरा फेरिंजियल क्लेफ्ट इधर बन गया। सो दैट्स हाउ इट इज। द स्पेस बिटवीन द फेरिंजियल आर्चेस इज नोन एज फेरिंजियल क्लेफ्ट। ठीक है। Simultaneously with the development of the arches and the cleft, a number of outpocketings also appear along the lateral walls of the pharynx। तो इस तरह के पॉकेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो देयर इज अ pharyngeal arch और cleft और पॉकेट्स। ये जो पॉकेट्स हैं, these are called pharyngeal pouches। ठीक है। So we now have 3 things to discuss। We have pharyngeal arches, we have pharyngeal clefts, which is the space between the pharyngeal arches, and then we have pharyngeal pouches as well। You see these big structures। So we now have pharyngeal pouches। So 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं अभी अगले डिस्कशन में। ठीक है। द पाउचेज पेनिट्रेट द सराउंडिंग mesenchyme but do not establish an open communication with the surrounding structure, and therefore the development of pharyngeal arches, clefts and pouches resemble formation of gills. Structurally they do, but they are not functionally as gills. The term pharyngeal in previous times was also known as branchial arches because of their resemblance with the gill development, but now this is called pharyngeal arch anyways. Now pharyngeal arches do not only contribute to formation of the neck but also important role in the formation of face structures. At the end of the 4th week, the center for face is formed by stomodem, the oral opening, surrounded by the first pair of pharyngeal arches. So if we look at the diagram, where is figure 17.5, this one. So this is the oral opening area. Stomodem is what we call it. Stomodem is starting to be surrounded by the pharyngeal arches. Okay, so pharyngeal arches are important in formation of neck as well as head structures. When the embryo is 42 days old, 5
mesenchymal prominences. इनका जिक्र अभी हम later on भी पढ़ेंगे जब फेस की डेवलपमेंट करेंगे. There are 5 prominences और उन prominences से important structures बनते हैं फेस के. The prominences are mandibular prominences. So if I look at this diagram again, so if you look here, this is the mandibular prominence, this is the maxillary prominence, this is the frontonasal prominence. तो ये typical prominence हैं, 2 mandible, 2 maxillary, 1 frontonasal. So 5 ये prominence बनते हैं. Paired mandibular prominence, paired maxillary prominence, and then we also have the frontonasal prominence. अब ये हर prominence देखें, जो mandibular prominence है, it is derived from first pharyngeal arch, है ना. So that's how it becomes important कि ये जो pharyngeal arches हैं, they are giving important prominences and developing important parts of the face. This will come later in this chapter जब हम development of face पढ़ेंगे, तब ये और डिटेल में चीज़ आएगी. ठीक है. Now, since I am telling you कि pharyngeal arch formation is the superstar event in the development of head and neck, so let us now discuss कि जो pharyngeal arches हैं ये क्या होती हैं, कितनी होती हैं, क्या क्या बनाती हैं. Each pharyngeal arch consists of a core of mesenchyme. ये तो मैंने आपको बता दिया कि in the core there is a mesenchymal tissue, and on the outside it is obviously surrounded by the surface ectoderm. Inside it is surrounded by epithelium as well, which is of endodermal origin. So अगर हम pharyngeal arch की बात करें, if this is the mesenchymal core of the tissue, so on the outside it is surrounded by surface ectoderm, on the inside it will be lined with endodermal lining. ठीक है. In addition to the mesenchyme derived from paraxial and lateral plate mesoderm, the core of each arch also receives contribution from neural crest cells. ये बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि जो mesenchyme है हेड और नेक डेवलपमेंट का, उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं. The first one was the lateral plate mesoderm, then number 2 we had paraxial mesoderm, number 3 we have neural crest cells, and then number 4 there were ectodermal placoids as well. So ये 4 चीज़ें हैं जो contribute करती हैं in the mesenchymal development. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि in addition to the mesenchyme which is derived from paraxial and the lateral plate mesoderm, the core of each pharyngeal arch also receive contribution from the neural crest cell, which migrate into the arches to contribute to skeletal component. So the neural crest cell forms the skeletal component of the face. The original mesoderm of the arches give rise to the musculature of the face and neck. Thus, each pharyngeal arch is characterized by its own muscular component. The muscular component of each arch have their own cranial nerve supply, and wherever the muscle cells migrate, they will still have the same cranial nerve component. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक मसल यहाँ डेवलप हो रहा है फर्स्ट pharyngeal arch में फॉर एग्जाम्पल, और ये मसल यहाँ डेवलप हो रहा है, इसकी एक डेजिग्नेटेड नर्व सप्लाई है जो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. अब सपोज डेवलपमेंट के बाद इस मसल में माइग्रेशन होती है और अब उसकी पोजीशन ये हो जाती है, सो इट विल स्टिल कैरी ऑन द सेम नर्व सप्लाई, और इसकी वही नर्व सप्लाई होगी जो फर्स्ट pharyngeal arch की नर्व सप्लाई थी, बिकॉज ये मसल डेवलप हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट pharyngeal arch. So therefore the nervous supply remains the same as it was original during the process of embryogenesis. It is not changed later on. यार ऐसे नहीं होता कि अब यहाँ से माइग्रेट होकर इधर आ गया तो अब इधर की कोई नर्व सप्लाई करना शुरू कर देगी. It carries its nerve supply along with itself. ठीक है. In addition, the arch also has its own arterial component. और इसका कहने का सिंपल मतलब ये इस पूरे पैराग्राफ का कि हर pharyngeal आर्च का अपना एक नर्व सप्लाई है, अपना एक आर्टीरियल सप्लाई है. ओके. अब ये जो अलग अलग आर्चेज हैं इनके बारे में कुछ अलग स्पेसिफिक बातें हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट pharyngeal arch. The first pharyngeal arch consists of a dorsal portion which is known as the maxillary process, which extends forward beneath the region of the eye, and a ventral portion. So there is a dorsal portion, and then there is a ventral portion which is the mandibular process which contains the macal cartilage. अब दो ये आपको processes याद रखने हैं, dorsal and ventral of the first pharyngeal arch. During further development, macal's cartilage disappear except for the two small portions at its dorsal end that persist to form incus and malleus. ये सारी details अगर याद न भी रहें तो इतना पता होना ज़रूरी है कि first pharyngeal arch at the end makes incus and malleus, not the stapes. The mesenchyme of the maxillary process
process, इसका जो dorsal portion था, maxillary process, give rise to, this is important, सुनिए, pre-maxilla, maxilla, zygomeric and part of the temporal bone. So skull की काफ़ी important bones हैं जो बन रही हैं from the first pharyngeal arch, and that happens through the membranous ossification. अब जो mandible है, it is also formed by the membranous ossification of the mesenchymal tissue surrounding the mechal cartilage. In addition, the first arch contributes to the formation of the bones of the middle ear, incus or malleus जैसे बन रहे थे, part of the external ear and external auditory meatus. Muscles of the first pharyngeal arch include the muscles of mastication, including pterygoids and temporalis, anterior belly of digastric, mylohyoid, tensor tympana. Important muscle list. The nerve supply to the muscles of the first arch is provided by extremely important mandibular branch of the trigeminal. So trigeminal mandibular branch is the nerve supply for all the structures derived from first pharyngeal arch. अब चाहे ये muscles कहीं आगे पीछे हो जाएं, but that is the nerve supply, mandibular branch of the trigeminal nerve. Because mesenchyme from the first arch also contribute to the dermis of the face, sensory supply to the skin of the face is provided by ophthalmic, maxillary, mandibular branches, again of the trigeminal nerve, because trigeminal is the nerve for the first pharyngeal arch. Muscles of the arch do not always attach to the bony or cartilaginous components of their own arch, but sometimes they migrate into the surrounding region. Despite their migration, they retain their nerve supply of the original embryological origin. ठीक है? अब मैंने कहा था कि एक 5-star table है जो अभी मैं छुड़वा रहा हूँ, but let's have a look at this table now, because now we have talked about the first pharyngeal arch, जिसके दो components हैं. There is a maxillary component and there is a mandibular component, dorsal and ventral. Nerve supply कौन सी है इसकी? It's the trigeminal nerve. And what are the muscles which are derived from the first pharyngeal arch? Muscles of mastication and the anterior belly of digastric, tensor palatine and tensor tympani as well. Skeletal कौन से structures हैं जो develop होते हैं from the first arch? They include the premaxilla, maxilla, zygomeric, part of the temporal bone, mechal cartilage, mandible malleus, incus, sphenomandibular ligament. So that is a must know for you. एग्जाम में ये अगर आपको नहीं आता then you are stuck. बहुत पूछते हैं कि first pharyngeal arch के derivatives क्या हैं, तो आपको उसकी nerve supply पता होनी चाहिए, muscles जो drive हो रहे हैं first pharyngeal arch से, और skeletal component जो drive हो रहा है first pharyngeal arch से. So that's all about the first pharyngeal arch. अब बात करते हैं second pharyngeal arch की. So the second pharyngeal arch का जो cartilage है और the hyoid arch is other name for this one, give rise to, अब ये क्या क्या skeletal component बना रहा है देखें, steps, another ear in internal ear में जो एक और हमारे पास जो कान की हड्डी जिसे हम कहते हैं स्टेप्स. सो मेलियस, इनकस और स्टेप्स. इनकस और मेलियस बन रहे थे फ्रॉम द फर्स्ट pharyngeal arch. Stapes is being derived from the second pharyngeal arch. Steroid process of the temporal bone. And this is something that you have to actually memorize, right? Upper part of the body of the hyoid. Mesenchyme of the arch also forms the external ear. Muscles कौन से हैं जनाब? Stapedius, stylohyoid, posterior belly, anterior belly बन रही थी from the first arch. The muscles of the facial expression, आप किसी को good looks देते हैं, bad looks देते हैं, angry looks देते हैं. These facial expressions are all because of your second pharyngeal arch. क्योंकि सारे facial expression के जो muscles हैं, they are derived from the facial nerve से जो supply हो रहा है second pharyngeal arch. Okay? Now इसकी nerve supply क्या है? Facial nerve. The nerve of the second arch. First की कौन सी? First pharyngeal arch की nerve कौन सी थी? It was the trigeminal. Second की nerve कौन सी है? Facial nerve. So now again, if you go back to the 5-star table, then you will realize how important the table is. Now we are talking about the second pharyngeal arch, and the nerve supply is facial. The muscles which are derived from the second arch are facial expression के muscles. Posterior belly of digastric, stylohyoid से. अब face की anatomy मैंने already पढ़ाई हुई है, तो आपको पता है कि जो facial muscles हैं expression के वो कौन से हैं. So orbicularis oculi, for example, orbicularis oris, platysma, these are all the facial expression muscles. Skeletal component कौन सा drive होता है from the second pharyngeal arch? Stapes, styloid process, stylohyoid ligament, all these structures. Okay, so keep reading the table one by one कि कौन सी arch है, उसकी nerve supply क्या है, muscles कौन से drive हो रहे हैं, skeleton कौन सा drive हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम text पढ़ेंगे, लेकिन you should be able to now read this. Third pharyngeal arch की nerve supply क्या है? Glossopharyngeal. Muscle कौन सा drive हो रहा है? Easy to remember, only one, stylopharyngeus. And the bones, hyoid bone के greater horn and lower portion of the hyoid.
राइट पढ़ लेते हैं ज़रा. थर्ड फेरेंजियल आर्च भी देख लेते हैं, उसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. All that we read in the table should be there. The cartilage of the third pharyngeal arch produces the lower part of the body of greater horn of the hyoid. ये लिखा हुआ था टेबल में, अभी हमने देखा. And the muscle is stylopharyngeus and the nerve is glossopharyngeal. Easy. अच्छा, अब फोर्थ एंड सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस, इनका जो कार्टिलेजिनस कंपोनेंट है फोर्थ फेरेंजियल आर्च का और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च का, दे फ्यूज टू फॉर्म द थायरॉइड, क्रिकोइड, एरेटनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स. मसल्स कौन कौन से बनते हैं जी? क्रिकोथायरॉइड मसल, लिवेटर एंड सो रिमेंबर दीज मसल्स, ओके. एंड द नर्व सप्लाई इज वेगस, सुपीरियर laryngeal branch of the vagus, okay. Intrinsic muscles of the larynx are supplied by the recurrent branches also from the vagus. So vagus is the nerve, okay. If we go back to the table again, which I call the 5-star table, it details everything that we just read. 4 to 6 pharyngeal arches, vagus is the nerve, superior laryngeal is for the fourth, recurrent laryngeal is for the sixth arch, okay. पांचवी आर्च कहाँ गई? फिफ्थ आर्च, ये आप मुझे बताएंगे. एम्ब्रियोलॉजी की मेरी पिछली वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू टेल मी वेयर इज द फिफ्थ फेरेंजियल आर्च. नाउ ये मसल्स बन रहे हैं और ये स्केलेटल कंपोनेंट्स बन रहे हैं. सो इफ यू मेमोराइज दिस टेबल देन यू आर गुड फॉर द फेरेंजियल आर्चेस. यू कैन नॉट मेस अप विद द नर्व सप्लाई एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस. इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नाउ मैंने आपसे कहा था कि देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स जो हमें डिस्कस करने हैं. वन इज द फेरेंजियल आर्च, जो कि ये कंपोनेंट है. द अदर वाज द फेरेंजियल क्लेफ्ट एंड देन द अदर वन वाज द फेरेंजियल पाउच. ठीक है, अब वो जो फेरेंजियल पाउच है उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं जो हमें पढ़नी है. आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग द फेरेंजियल पाउचेस. अब सबसे पहले तो आपको ये पाउच बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि फेरेंजियल पाउच है किधर, क्या चीज है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. दैट्स अ नाइस डायग्राम. इट एक्चुअली शोज यू थ्रू द सेक्शन कि दीज आर द फेरेंजियल आर्चेस फॉर एग्जाम्पल, और ये जो आर्चेस के बीच में ये वाला एरिया है दिस इज द क्लेफ्ट. अब ये क्लेफ्ट देखें इस तरह से आगे जाके एक्सटेंड करके ऐसे एक पाउच बना रहा है. सो दैट्स द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, दैट्स द सेकंड फेरेंजियल पाउच, दैट्स द थर्ड फेरेंजियल पाउच एंड दिस इज द फोर्थ फेरेंजियल पाउच. सो पाउच एज द नेम इंडिकेट्स इज एन आउटपॉकेटिंग फ्रॉम द इंटरनल साइड ऑफ द क्लेफ्ट. तो क्लेफ्ट की ग्रोथ के साथ और जो फेरेंजियल आर्चेस हैं उनकी ग्रोथ के साथ ये पाउचेस बनते हैं. अब देयर आर 4 फेरेंजियल पाउचेस, 1 2 3 and 4. और ये जो 4 pharyngeal pouches हैं they obviously give rise to very important structures, and I always tell my students कि ये जो डायग्राम इस वक्त हम देख रहे हैं this is of high value because इस डायग्राम में they are clearly telling you कि what are the derivatives of each one of the pouch. So for example if you look at the first, so ये जो 1 लिखा हुआ है ये pouch नहीं है, ये first pharyngeal arch है. So जो first pharyngeal pouch है it is actually between the first pharyngeal arch and the second pharyngeal arch, और उसके बीच में ये first pouch है. इस first pouch से देखें क्या क्या चीज़ें develop हो रही हैं, auditory tube and the primitive tympanic cavity. So the first pharyngeal pouch give rise to very important air structures, and then the second pharyngeal pouch which is between the second and the third pharyngeal arch gives rise to palatine tonsils. Now the third pharyngeal pouch actually give rise to parathyroid gland का inferior portion, also thymus, and then the fourth pharyngeal pouch is the last one. It gives rise to parathyroid gland का superior part and ultimopharyngeal body. So ये diagram, if you understand this diagram and understand the concept कि this is the pharyngeal arch, this is the pharyngeal arch, उसके बीच में this is the pharyngeal pouch, हर pouch क्या बना रहा है, try to remember this diagram, and this is all is written here. The human embryo has 4 pairs of pharyngeal pouches. Obviously these are in pairs on the right side as well as on the left side. और ये जो pharyngeal pouches हैं they are 4 in number. Remember this, 5th one is rudimentary, okay? Because the epithelial endodermal lining of the pouches give rise to a number of important organs, the fate is discussed separately, and this is what I just told you in this diagram. So let's see कि जो first pharyngeal pouch है उससे क्या बनता है. The first pharyngeal pouch forms a stalk-like diverticulum, the tubotympanic recess, which comes in contact with the epithelial lining of the first pharyngeal cleft. The distal portion of the diverticulum widens to a sac-like structure, the primitive tympanic or the middle ear cavity, and the proximal part remains narrow, which forms the eustachian tube.
So these are further details. Even if you don't remember this, you should remember that the first pharyngeal pouch का जो proximal portion है, it forms the auditory tube, और जो distal portion है, it forms the primitive tympanic cavity. That's as simple as it. The lining of the tympanic cavity later aids in the formation of the tympanic membrane or the eardrum. So first pharyngeal pouch ले दे के इस पूरे पैराग्राफ की स्टोरी का जो समरी है, खुलासा यही है कि इससे बन रहा है ऑडिटरी ट्यूब एंड प्रिमिटिव टिम्पैनिक कैविटी, दैट्स ऑल. और सेकंड फेरेंजियल पाउच जो है उससे क्या चीज़ डेवलप हो रही है, पैलेटाइन टॉन्सिल. इवन इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, यू शुड रिमेंबर इट इज मेकिंग पैलेटाइन टॉन्सिल्स. द थर्ड फेरेंजियल पाउच इज मेकिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू हियर, पैराथायराइड का इंफीरियर पार्ट और थाइमस, एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, इंफीरियर पार्ट ऑफ द पैराथायरॉइड एंड द थाइमस. बाकी सारी डिटेल्स काम की नहीं है. अब बिल्कुल इसी तरह जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है, इट मेक्स सुपीरियर पैराथायरॉइड and the ultimobranchial body, which is later incorporated into the thyroid gland. Cells of the ultimobranchial body give rise to parafollicular cells or the C cells of the thyroid gland. So that's an important derivative. These cells secrete calcitonin, which is very important in calcium metabolism. Okay, so that's fourth pharyngeal pouch. So in summary, if you remember the diagram that I just showed you, इसमें सारे pharyngeal pouches, उनके derivatives easily visible hain, and just remember this one and then you are good to go. Right, now we are left with pharyngeal clefts. The 5-week old embryo is characterized by presence of 4 pharyngeal clefts. So you see 4 pharyngeal pouches, 4 pharyngeal clefts. Previously it was thought that the first cleft contributed the external auditory meatus of the external ear, but this claim has been disproved. Instead, the external auditory meatus forms by invagination of surface ectoderm from the first pharyngeal arch. So that's kind of a little too much detail. अक्सर स्टूडेंट इसे घबराते हैं, याद नहीं करते, but that's fine. Overgrowth of the second arch as it forms over the external ear causes the first cleft to disappear. That's important thing. Active proliferation of the mesenchymal tissue in the second arch causes it to overlap the third and fourth arches. Finally, it merges with the epicardial ridge in the lower part of the neck, and the second and the third, fourth cleft lose contact with the outside. The cleft form a cavity lined with ectodermal epithelium. It's called the cervical sinus, but with further development, the sinus disappears. So actually jitni bhi clefts hain, they are ultimately going to disappear. So that's the bottom line that you have to remember about the pharyngeal clefts. Okay, this is an important table again. Pharyngeal pouches, each pharyngeal pouch its derivative, each pharyngeal pouch its derivative. Okay, and these are the same as also depicted in this particular diagram. So that's all the discussion about pharyngeal arches, pharyngeal pouches and pharyngeal clefts. Now let's talk about some molecular regulation of facial development. As you know कि Langman ने अब तमाम ही chapters में एक section include किया हुआ है molecular regulation का, and the molecular regulation basically means कि कौन सी genes involved हैं. और अभी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं हर अपनी एम्ब्रियोलॉजी की वीडियो में ये बात कहता हूँ कि I mean things are not very clear in embryology. We have a beautiful human body and the development is still hidden. ये बिल्कुल hidden truth है. We don't actually 100% हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है कि किस तरह डेवलपमेंट का प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मोर एंड मोर रिसर्च, कुछ प्लेयर्स अनरेवल हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स arise from the neuroepithelial cell adjacent to the surface ectoderm all along the edges of the neural fold. Bone morphogenic protein BMP, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसका एक important रोल है. Signaling is important in establishing this edge region and then regulate the Wnt expression to cause the prospective crest cell to undergo epithelial to mesenchymal transition. So basically जितना भी हम डेवलपमेंट में अब तक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, mesenchymal tissue का interaction with the epithelial tissue, that is the main interface for development. और ये सारा कंट्रोल हो रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में via the BMP and the Wnt1 pathway. In the hindbrain, the crest cells originate in the specific pattern form the segments which are called rhombomeres. There are 8 of these segments in the hindbrain, rhombomere 1 से लेके rhombomere 8 तक, and neural crest cells from a specific segment migrate to populate specific pharyngeal arches. These crest cells
migrate in three streams. Those from R1 and R2 यानी rhombomere 1 and rhombomere 2 migrate. आपको समझ में आ रही है सारी बात हो क्या रही है? Neural crest cells हैं hind brain में which are arranged in sort of groups, और एक groups को हम नाम दे रहे हैं rhombomeres. Rhombomere 1 और rhombomere 2 जो है that migrate to the first arch along with the crest cells from the caudal mid brain region. That's an unimportant line but that is important. R1 and R2 migrate to the first arch. Crest cells from R4 migrate to the second arch, and R6 and R7 migrate to arches 4 and 6. Segregation of the three streams is assisted by the fact that very few crest cells form from R3 and R5. यानी R3 and 5 आप देख रहे हैं यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, R1 R2 का हुआ, R4 का हुआ, R6 and 7 का हुआ. ठीक है. Three distinct streams are important because they provide axonal guidance cue for the axon from ganglia forming in the head and neck region, including the trigeminal ganglia. So, well, again, this is very preliminary data which is available, but we know that in the hindbrain region, these neural crest cells are arranged like this. और ये जो arrangement है, हमें ये भी पता है कि they migrate into the pharyngeal arches. Okay. Now, neural crest cells that populate the pharyngeal arches form the skeletal components from each particular arch. हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ना कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से क्या बनता है, सेकंड से क्या बनता है. सो वो जितना भी स्केलेटल कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड बाय द माइग्रेशन ऑफ द rhombomeres into the pharyngeal arches. Previously it was thought that the neural crest cells regulated patterning of these skeletal elements, but now it is clear that this process is controlled by the pharyngeal pouch endoderm, and basically the migrating neural crest cells contribute to formation of the skeletal structure of head and neck. Formation of the pharyngeal pouches occur prior to the neural crest cell migration. That's unnecessary, too much detail. You should be fine with this. As pouches form, they express very characteristic pattern of genes. BMP7 is expressed in the posterior endoderm of each pouch. ये सुने आप, जो pharyngeal pouches है उसकी importance देखें, उसमें specific genetic profile से पता लगा है कि this particular gene is overexpressed. Then fibroblast growth factor 8 lies in the anterior endoderm. PAX1 expression is restricted to the dorsal most endoderm. Sonic hedgehog pathway is expressed, and in the posterior endoderm of the second and the third pouches, it plays an important role in the development of various structures. These expression patterns then regulate differentiation and patterning of the pharyngeal arches. देखो बात ये है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये जो pharyngeal arch है इससे ये बनता है, उस pharyngeal arch से वो बनता है. वो कैसे बनता है एक्चुअली आज तक पूरे का पूरा क्लियर है भी नहीं, और कुछ जीन्स पता हैं जिनसे हमको पता लगता है कि पैटर्निंग होती है, उन जीन्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं. This process, however, is also dependent on the mesenchyme and represents another example of EMT, epithelial mesenchymal transition, which is very important phenomena in the whole embryogenesis. The transcription factors include Hox genes, and well, this is actually too much detail. अगर आपको याद रहती है तो good for you, नहीं रहती तो it's okay. Neural crest cells acquire their specific gene expression patterns from rhombomeres of their origin. Now, the pattern of rhombomeres itself is established by a nested code of Hox gene expression in the hindbrain. आपको पता है ना rhombomeres कहाँ से originate हो रहे हैं? From the hindbrain region. The first arch, the Hox negative, but does not express OTX2, and the second arch express the Hox A2, and arch 3 to 6 express members of Hox genes Hox A3, Hox B3, and Hox D3. Now let's try to figure them out in that particular diagram. So you see here, if you want to really go into details of what part of the pharyngeal arch express what sort of the genetic, so this is the diagram to look for. Different color patterns for BMP. So for example, BMP7 is being expressed in all these areas which are underlined blue, and then this is for FG81. So that's a good generic profiling color wise, but I don't think this is usually asked in the exam because this is still a developing field, a very complicated stuff and not very clear. The remainder of the skeleton of the face, the mid and the upper facial regions, well, again, two names that you have to remember in face development: Sonic hedgehog and FFGH.
इससे ज़्यादा हमें पता नहीं है, चूंकि इससे ज़्यादा हमें पता नहीं है, इससे ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते। ओके, सिर्फ हमें जो मोटी मोटी बात पता है वो ये कि जो हाइंड ब्रेन का रीजन है उसमें ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के ग्रुप्स हैं विच आर कॉल्ड R1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रोम्बोमेयर्स। ये रोम्बोमेयर्स ट्रांसलेट होते हैं, माइग्रेट होते हैं और पहुंच जाते हैं फेरेंजियल आर्चेस तक। दिस इज व्हाट वी नो। एंड देन some of the genetic expression patterns are known. So for example, OTX2 is expressed in R1 and R2. R4 is notorious for expression of HOX2 and 6 7 for HOXA3, HOXB3 and HOXD3. So that is a good diagram, easy to understand, easy to memorize. Okay, so let's now move on to some clinical correlates which are associated with the discussion that we have done up till now. पहला जो क्लिनिकल स्टफ इन्होंने यहाँ मेंशन किया है वो एक्टोपिक थाइमस या पैराथायरॉइड टिश्यू है। बेसिकली बात ये है कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये डेवलप होते हैं एंड देन दे आल्सो एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर। सो इन डूइंग द माइग्रेटरी लाइन व्हाट हैपेंस के कहीं उस लाइन में, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टिश्यू डेवलप हुआ, इसे माइग्रेट होकर यहाँ पे आना है, तो 100% ऑफ द टाइम ये ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा टिश्यू माइग्रेट सही से हो जाए। हो सकता है यहाँ थोड़ा टिश्यू रह जाए, यहाँ रह जाए। सो अगर इस तरह होगा कि माइग्रेटरी लाइन के ऊपर कहीं पर भी ये टिश्यू के रेमनेंट्स हों, देन दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्टोपिक टिश्यू। थाइमस में भी हो सकता है, पैराथायरॉइड में भी हो सकता है, इवन थायरॉइड में भी हो सकता है। ओके, देन फेरेंजियल फिस्टुलास की हमने ऑलरेडी बात की कि फिस्टुलास कैन बी मेड अगर इंटरनल कम्युनिकेशन हो विद द एक्सटीरियर, सो दैट कैन फॉर्म द फिस्टुलास। देयर आर डिफरेंट वराइटीज एंटीरियर टू द sternocleidomastoid. You don't have to remember them all, but the fistulas are external communications. Okay, then there is a comment that I have to make about the neural crest cells. देखिए न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं दे आर हैविली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल फीचर्स, और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कोनोट्रंकल एंडोकार्डियल कुशन फॉर्मेशन विच सेपरेट्स द आउटलेट फ्रॉम द हार्ट। सो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि अगर कोई पेशेंट आपको क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ आता है, से फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट विद क्लेफ्ट लिप या अ पेशेंट विद क्लेफ्ट पैलेट, अगर इस तरह का पेशेंट आता है तो आई विल ऑलवेज सस्पेक्ट कि इस पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होंगे, बिकॉज देयर इज अ क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट, जिसका मतलब ये कि न्यूरल सेल जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो भाई न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं वो कार्डियक डेवलपमेंट में भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो इफ यू आर सीइंग अ पेशेंट विद क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज, ऑलवेज सस्पेक्ट कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज एज वेल। दैट्स एन इंपॉर्टेंट हिंट। ओके, अब फिर कुछ इन्होंने सिंड्रोम्स बताए हैं। आपको इन सिंड्रोम्स के बारे में सिंपल ये याद होना चाहिए कि कौन से सिंड्रोम में डिफेक्ट क्या है और उससे मेन फीचर क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ Treacher-Collins syndrome, also called the mandibulofacial dysostosis. It's a rare autosomal dominant disorder occurring in 1 in 50,000 live births, with 60% of the cases arising as new mutations. The syndrome is characterized by hypoplasia of maxilla, mandible, and zygomatic arches. They may be actually even absent. Cleft palate is also seen in this patient, and it is supposed to be linked with mutation of a gene called TCOF1 gene. Location is 5q32, and this is supposed to be responsible for this particular syndrome in most of the cases. And the product of this gene is a nuclear protein called triacyl, and therefore it is called Treacher syndrome, Treacher-Collins syndrome, that appears to be necessary for preventing apoptosis and maintaining proliferation of the neural crest cells. अब mutation होगी तो apoptosis और maintenance का cycle disturb होगा, and all these defects can happen. Okay, there is another disease called Robin sequence. They may occur independently or in association with other syndromes, and like Treacher-Collins syndrome, they also affect the structures of the first arch. Okay, and this is actually more common than the Treacher-Collins syndrome. Then there is another deletion syndrome which is common, the 22q11.2. This is the location of the genomic defect. This deletion syndrome is the most common deletion syndrome in humans, so you must know this, and it is associated with a lot of problems. Thymus की development का मसला, leading to DiGeorge anomaly, DiGeorge syndrome. So pretty important one, and some of the genetic abnormalities are also linked with this deletion. So for example, TBX1 का genetic defect, and you see the rate 1 per 4,000. So this is not uncommon. और चूंकि DiGeorge syndrome है, so all the pathology associated with DiGeorge syndrome will obviously be present in these patients, such as T cell immune system gurgur and all that. It's not the topic here, so I'm not going into the detail. Okay, now hemifacial microsomia includes a number of craniofacial abnormalities that usually involve maxillary, temporal, zygomatic, which are small and flat, so small bones in the facial region. Air
इन ऑशिया एयर पूरा एक्सटर्नल एयर डेवलप ही नहीं हुआ, माइक्रो ऑशिया छोटा सा एक्सटर्नल एयर है, आइज में प्रॉब्लम हो सकता है, वर्टिब्री में प्रॉब्लम हो सकता है, so that is a broad spectrum disorder, I would say, right? Now also associated with tetralogy of Fallot, by the way, right? So important clinical stuff. देखें बात ये है कि एम्ब्रियोलॉजी में जहाँ जितनी सेल की मूवमेंट ज़्यादा है, जहाँ जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वहाँ एरर के चांसेस भी हैं, और नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस में जब एरर होगा, इसी को तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड देन the clinical correlate comes into the picture, embryological defects. Okay, let us now talk about the development of tongue. Tongue appears in the embryo when it is approximately 4 weeks in age, and its story begins by a few swellings. दो lateral swellings हैं, lateral lingual swellings, and there is one medial swelling, which is also known as the tuberculum impar. So if you look at this diagram, for example, here you see the pharyngeal arches, and in the midline you see there is tuberculum impar, and these are the two lateral swellings. So this is the beginning of the tongue formation. और ये सारे नाम यहाँ लिखे हुए देखें, lateral lingual swellings and tuberculum impar. ये तीन major structures हैं जो initially appear होते हैं around 4 weeks. These three swellings originate from the first pharyngeal arch. Now that's an important thing again to know this, कि ये जो tongue का ये वाला portion है जो आगे चल के obviously जो proper body of tongue बनेगा, that is all developed from the first pharyngeal arch. Okay, now you should be able to then tell me कि इसकी nerve supply क्या होगी. You should know what is the nerve supply of the first pharyngeal arch by now, and all this region which is developing from the first pharyngeal arch will have the same nerve supply as that of the first pharyngeal arch. अच्छा जी, अब these are the swellings which form the body of the tongue. There are some more swellings that we have to discuss. जो tongue formation में they play a key role. There is a second median swelling which is known as copula or the hypobranchial eminence. They are equal to each other. Either you call them copula or you call them hypobranchial eminence. Is formed by mesoderm of second, third, as well as part of the fourth branchial arch or the pharyngeal arch. Finally, a third median swelling formed by the posterior part of the fourth arch marks the development of the epiglottis. So if you look at this diagram here again, this is the copula. So copula is lying just behind the structures that we just discussed. Lateral swellings, tuberculum impar, and then we have the copula. या copula का दूसरा नाम क्या है? Hypobranchial eminence. और copula के बिल्कुल caudal side पे यानी इसकी नीचे की तरफ there is epiglottal swelling. So ये सारी swellings आपको clear होनी चाहिए because इन्हीं swelling से फिर structures develop होंगे. So if you see the lateral tongue swelling and the tuberculum impar, they grow in the body of tongue. और जो copula है this then develops into the root of the tongue. ठीक है? And the junction between the body of the tongue and the root of the tongue is marked by a foramen which is called foramen cecum, और इसकी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट के हवाले से, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में. नाउ इमीडिएटली behind this swelling there are laryngeal orifice and which is flanked by the arytenoid swelling. So this is the laryngeal orifice which is lying immediately caudal to the epiglottal swelling. और ये जो laryngeal orifice है opening for the larynx, it is surrounded by two arytenoid swellings. So this diagram is easy to understand and you should pay attention if you want to understand the development of tongue. ये सारे terms आपको पता होने चाहिए. As the lateral swelling increases in size, they overglow the tuberculum impar and merge forming the anterior two-third or the body of the tongue. So ये जो structures थे lateral swellings and tuberculum impar, ये जब grow करते हैं so they kind of make the body of tongue, which is also called the anterior two-third of the tongue. Because the mucosa covering the body of the tongue originates from the first pharyngeal arch, the supply is by the trigeminal nerve key mandibular branch. The body of the tongue is separated from the posterior third by a V-shaped groove which is known as terminal sulcus. So that is the terminal sulcus which actually separates the body of the tongue from the posterior part of the tongue. So that kind of sulcus is the terminal sulcus. Okay? That's the distinction between the root of the tongue and the anterior part of the tongue. The posterior part of the root of the tongue originates from the second, third, and part of the fourth pharyngeal arches. The fact that sensory innervation to this part of the tongue is supplied by glossopharyngeal indicates that the tissue of the third arch overglows. So ये वाला जो part है, इसकी जो major nerve supply है, that is via the glossopharyngeal, which also indicates glossopharyngeal is the nerve supply for the third pharyngeal arch. तो इससे ये भी पता लगता है कि भाई चूंकि glossopharyngeal supply कर रही है, तो probably third pharyngeal arch का contribution
इस पार्ट ऑफ द टंग में सबसे ज़्यादा है. द एपिग्लॉटिस एंड द एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग आर इनर्वेटेड बाय सुपीरियर लेरिंजियल नर्व वेगस, एंड दैट शोज द डेरिवेशन फ्रॉम रेलेवेंट फेरेंजियल आर्च. ओके, right. और आगे चलते हैं जी. Some of the tongue muscles probably differentiate in situ, but most are derived from myoblast originating in the occipital somites. Therefore, the tongue musculature are innervated by hypoglossal. So you see, the nerve innervation is actually what it used to be during embryogenesis. अगर कोई चीज़ first pharyngeal arch से drive हो रही है तो उसकी nerve supply भी वैसी ही होगी. अगर कोई चीज़ second pharyngeal arch से drive हो रही है तो उसकी nerve supply वैसी होगी. Okay, the general sensory innervation of the tongue is easy to understand. And why is it easy to understand? Because you just need to know कि कौन सा part of the tongue कहाँ से drive हुआ है. जहाँ से वो drive हुआ है वही उसकी nerve supply होगी. So the body, for example, is supplied by the trigeminal nerve, the nerve of the first arch. So because the body is derived from the first arch, it has the same nerve supply. Easy to understand. Root is primarily by the glossopharyngeal, but also by the vagus, because root is derived from derivatives of relevant arches, the nerve of the third and fourth vagus and glossopharyngeal. So that's easy. And the special, अब टंग का मसला ये है कि टंग के पास सिर्फ जनरल सेंसेशन नहीं है, टंग के पास स्पेशल सेंसेशन भी है, विच इज़ द सेंसेशन ऑफ टेस्ट. टू द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्डा टेम्पानी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, वेयर इज द पोस्टीरियर थर्ड इज सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरेंजियल. सो अगर आपसे टंग की जनरल नर्व सप्लाई पूछेंगे, सो इट गोज अकॉर्डिंग टू द फेरेंजियल आर्चेस, बट यू हैव टू रिमेंबर कि टंग का इंटीरियर और पोस्टीरियर जो पार्ट है उनकी टेस्ट सप्लाई भी है, स्पेशल सेंसरी इनर्वेशन भी है, एंड दैट्स वाया इंटीरियर थर्ड जो है, दैट्स वाया द फेशियल नर्व, एंड द पोस्टीरियर थर्ड इज वाया द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. ओके, Now, इसी वक्त जब हम ये टंग की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट थायरॉयड ग्लैंड डेवलपमेंट, विच अपीयर्स एज एन एपिथेलियल proliferation in the floor of the pharynx between, ये सुना है, between the tuberculum impar and copula. अब ये दोनों टर्म्स आपको पता है. ट्यूबरकुलम इम्पार ढूंढे किधर है? ट्यूबरकुलम इम्पार इन दिस फिगर वाज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और कॉप्यूला किधर है? इधर कॉप्यूला है. तो ये वो जगह है बिटवीन द ट्यूबरकुलम इम्पार एंड कॉप्यूला जहां एक ग्रूव सा बनता है, एपिथेलियल ग्रोथ होती है और बाद में ग्रूव बन जाता है, क्योंकि वो जो भी एपिथेलियल ग्रोथ है वो ऐसे नीचे डिसेंड करना शुरू कर देती है. उस को हम नाम देते हैं फोरामेन सीकम, जो ग्रूव बनता है. सो दिस पॉइंट फोरामेन सीकम actually marks the area. ये जो फोरामेन दिख रहा है, फोरामेन सीकम, इट इज पॉइंटिंग द एरिया जहां थायराइड की डेवलपमेंट शुरू हुई थी और फिर थायराइड नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देता है. ठीक है. सब्सिक्वेंटली द थायराइड डिसेंड इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल गट as a bilobed diverticulum, and during this migration thyroid remains connected to the tongue by a narrow canal which is called the thyroglossal duct. This duct later disappears. So thyroid develop होता है tongue के साथ. That's a very important thing to know. अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. So this is where thyroid is developed. और जब एक दफ़ा यहाँ थायराइड डेवलप हो जाता है तो फिर वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है. इनिशियली इसका टंग के साथ कनेक्शन रहता है वाया द थायरोग्लोसल डक्ट, बाद में वो डिसअपियर हो जाती है. विथ फर्दर डेवलपमेंट द थायराइड ग्लैंड डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द हायोइड बोन, उसके सामने से गुजर रहा है. सो दैट इज द पाथ ऑफ डिसेंट ऑफ थायराइड. दिस इज वेयर इट इज डेवलप्ड, फोरामेन सीकम. और फिर देखिए किस तरह नीचे ट्रैवल करता है, हायोइड के सामने से ट्रैवल करता है, फिर यूं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है जो उसकी होती है. ओके. इट रीचेज इट्स फाइनल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया इन द 7th week. By then, it has acquired a small median isthmus, which is the connecting portion between the right lobe and the left lobe of thyroid. The thyroid begins its function approximately at the end of the 3rd month, at which time first follicles containing colloid become visible. Follicular cells, जो thyroid के हैं, produce colloid that serve as a source of thyroxine as well as triiodothyronine. और जो पैराफेलिकुलर सेल्स और सी सेल्स हैं which are derived from the ultimobranchial body, इसका भी ऊपर जिक्र किया था, they serve as the source of calcitonin. So that's all about the development of the thyroid gland. Okay, ectodermal pocketing से बनेगा, नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, ऊपर जो इसके रिमेन्स हैं they are called foramen cecum. कभी कभी एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो थायरोग्लोसल डक्ट है, जो थायराइड का कनेक्शन है विद द फोरामेन सीकम या टंग, वो परसिस्ट करता है. सो दैट इज परसिस्टेंट
थायरोग्लोसल डक्ट, जो कि यहाँ पे लिखी हुई भी है, देखें, थायरोग्लोसल डक्ट एंड thyroid anomalies. The thyroglossal cyst may lie at any point along the migratory pathway. So that is thyroglossal duct यहाँ से शुरू होगी ना, क्योंकि foramen cecum में और नीचे यहाँ तक जाएगी, तो कहीं पर भी वो जो duct है वो cyst की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है. That is then called the thyroglossal cyst. As indicated by its name, it is a cystic remnant of the thyroglossal duct. Although approximately 50% of these cysts are close to just inferior to the body of the hyoid, so most of them are there, body of the hyoid, inferior part. Okay, that's the most common location, 50%. But it can be actually anywhere during the migratory pathway. Sometimes the thyroglossal duct is connected to the outside, and then it is called the thyroglossal fistula. And this is true for any sinus. So अगर कोई भी opening skin पर बाहर की तरफ खुलती है, तो that is then known as a fistula. Such a fistula usually arises secondarily after rupture of the cyst. Aberrant thyroid tissue may be found anywhere along the path of the descent of the thyroid gland. It is commonly found at the base of the tongue, just behind the foramen cecum. And that makes sense because at the base of the tongue it is actually produced. और अगर यहाँ थोड़ा बहुत thyroid tissue रह गया, तो that is called aberrant thyroid tissue. Okay? Right, so that's all about the thyroid gland. Let's now talk about the embryogenesis of face. Face की जो development है वो start होती है by the end of 4th week, और it is marked by appearance of some important facial prominences. जाहिर है पूरी एम्ब्रियोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि टिश्यू में जब ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मीजेनकाइमल सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, एपिथेलियल और मीजेनकाइमल इंटरेक्शन हो रहा है, सो देयर आर प्रोमिनेंसेज और बर्ड्स, इस तरह की चीज़ें बनती हैं जो फिर फुल फ्लैज स्ट्रक्चर में डेवलप होती हैं. तो फेस की जो प्रोमिनेंसेज हैं, they are called facial prominences. They consist primarily of neural crest derived mesenchymal tissue and formed mainly by the first pair of pharyngeal arches. Okay, maxillary prominence is the first of these prominences. It can be distinguished lateral to the stomatum, and mandibular prominences which can be distinguished caudal to this maxillary prominence. So if you look at the diagram, this one for example, here we see this is the maxillary prominence, and caudal to the maxillary prominence is the mandibular prominence. Okay, so there are maxillary prominences, then caudal to the maxillary prominence there is mandibular prominence, and then there is a frontonasal prominence which is formed by proliferation of the mesenchyme ventral to the brain vesicle. So if you look at this diagram, this big one, this is the frontonasal prominence. So ये 5 prominences हैं, 2 maxillary prominences on each side, 2 mandibular prominences on each side, and a frontonasal prominence. Okay, right, on both sides of the frontonasal prominence there is local thickening of surface ectoderm which is called the nasal placard. It originates under the inductive influence of ventral portion of the forebrain. So you see the nasal placard here. So this is the frontonasal prominence. इसके दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं, ये एक थिकनिंग और इन्वेजिनेशन टाइप की, एक पिट टाइप की है, द नेजल प्लैकॉर्ड. ये वो एरिया है जहाँ पे ऑब्वियसली नेयर्स डेवलप होंगे, द नेजल पिट्स डेवलप होंगी. 5th वीक में व्हाट हैपेंस कि जो नेजल प्लैकॉर्ड्स हैं दे इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ घुसते हैं, इनमें पिट्स बनती हैं विच आर कॉल्ड नेजल पिट्स. इन डूइंग सो they create a ridge of tissue that surround each pit, and these are called nasal prominences. On the lateral side it is called lateral nasal prominence, on the medial side it is called medial nasal prominence. So again, if you look at this diagram, let me explain these prominences and nasal pits and everything to you one more time. So this is what we are looking at, and we are talking about the development of the face. So that actually is the primitive face. इसमें जो prominences हैं, this one in the midline, the bigger one is the frontonasal prominence. ये stomatum है, oral cavity, इसके lateral side पे there are maxillary prominences, and then caudal to the maxillary prominence these are the mandibular prominences. Okay, frontonasal prominence के दोनों साइड पर there is nasal placard. इसमें invagination होगी तो यहाँ पे एक groove बनेगा, कोई ना कोई diagram. Let me find a diagram for you. This one, this is a good diagram. You see this was the nasal placard. अब उसमें invagination हुई और ये और clear है, एक सुराख बन गया. सो देयर इज नॉस्ट्रल फॉर्मेशन बेसिकली. तो यहाँ पे नेजल कैविटी का ओरिजिन स्टार्ट हुआ है. अब जैसे ही यहाँ पे पिट बनती है, नेजल पिट, इसके लेटरल साइड पे एक फोल्ड होता है विच इज नोन एज लेटरल नेजल प्रोमिनेंस, और एक इसके मीडियल साइड पे फोल्ड होता है विच इज कॉल्ड मीडियल नेजल प्रोमिनेंस. तो ये एक्सटर्नल नेयर्स बन जाएंगे बेसिकली, और यहाँ पे ऐसे नोज बन जाएगी. इमेजिन दिस इज हाउ द फेस इज डेवलप्ड. ओके, नाउ दैट शुड बी क्लियर. During the following 2 weeks, maxillary prominence continue to increase in size. Simultaneously, they grow medially, compressing the medial nasal. अब ये this is now
काफ़ी सारी डिटेल विच एक्चुअली डजंट मेक सेंस. इट्स काइंड ऑफ ए स्टोरी टेलिंग कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट दैट्स व्हाट हैपेंस कि आपको प्रोमिनेंसेस पता होनी चाहिए. ऑब्वियसली इन सब में ग्रोथ होगी, दे विल मूव, सेल्स की मूवमेंट होगी, सम पार्ट्स विल फ्यूज विद ईच अदर एंड अल्टीमेटली यू स्टार्ट डेवलपिंग अ फेस लाइक दिस, यू सी. सो यू आर गेटिंग टू गेट अ फेस. सो दैट वाज द फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस. हियर वी हैड द मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, दिस वाज द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस. ये नेजल पिक बन गई और ये मीडियल और लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस बनना शुरू हो गए. ठीक है, फिर फर्दर जा रहे इन एरियाज में जब ग्रोथ होगी, देन वी एक्वायर अ प्रॉपर ह्यूमन लुकिंग लाइक फेस, समथिंग लाइक दिस. सो नाउ यू सी, imagine this diagram: frontonasal prominence, mandibular prominence, maxillary prominence, nose in the making, and with further growth of these structures you are getting a human like face. ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंस. अब उसकी सारी डिटेल्स जो यहाँ लिखी है ना, वो डिटेल्स एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी ऐसे ही है. एम्ब्रियोलॉजी में आपको बताते भाई ये बनता है, ये बनता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है. हमें नाम पता होने चाहिए, इवेंट्स कब नजर आते हैं ये पता होना चाहिए. इससे ज़्यादा की हमारी कैपेसिटी हमें पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है. सो देयर ऑब्वियसली इज अ नेचुरल सुपर पावर विच इज एक्चुअली मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग every step, many of which we actually don't know. So initially the maxillary and the lateral nasal prominence are separated by a deep groove, the nasolacrimal groove, जो बाद में further उसमें canalization होती है, it's converted into nasolacrimal duct and then lacrimal sac. Okay, that's fine. Cheeks और maxilla की development होती है, nose formation start हो जाती है. So the nose is actually formed by 5 facial prominence. So नाक में हमारी जो खूबसूरत सी nose है, उसमें 5 facial prominences are contributing. The frontonasal prominence भी contribute कर रहा है. It is giving rise to the bridge of the nose. Merged medial nasal prominence provide the crest and the tip of the nose, and the lateral nasal prominences forms the side of the nose, the ala of the nose. Okay, so ये diagram आपको बिल्कुल clear होनी चाहिए कि what we are looking at. And then we talk about the intermaxillary segment. As a result of the medial growth of the maxillary prominence, the two medial nasal prominences merge not only at the surface but also at the deeper level. So basically जो maxillary prominence है, इनकी medial growth होगी, and then the medial nasal prominences from both the sides, they come closer to each other. ये ऐसे नज़दीक आ जाएंगे and they will start fusing with each other, not only externally but also internally. और इस तरह जो internal structure बनेगा, दो prominences जब आपस में मिल जाएंगी, they will make the intermaxillary segment. और it is composed of a labial component which forms the philtrum. अभी मैं diagram पे दिखाता हूँ. The upper jaw component which carries the 4 incisor teeth and also a palatal component. The intermaxillary segment is continuous in the rostral portion as nasal septum. Again concept बिल्कुल clear अगर आपको रखना है तो आपको ये समझना होगा कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि maxillary prominence की medial growth हो रही है. So it is growing medially. अब जब ये पूरा medial growth करेगा तो ये वाला जो medial nasal prominence है, ये भी ऐसे medial move करेगी. जब ये medial move करेगी तो यहाँ आकर ये fuse हो जाएंगे आपस में. और now look at this diagram. अब कुछ इस तरह का structure आपको मिलेगा. So this is what is happening. Maxillary processes और ये आपस में सेंटर में दोनों प्रोसेसेस, ऑल्सो द मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस, ये सारा कुछ मिलकर ये जो चीज़ बनी इनके फ्यूजन से, बिकॉज ऑफ देयर मीडियल मूवमेंट, दिस इज नोन एज इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट. अब ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट जब फर्दर ग्रो करता है तो इससे वी गेट द प्राइमरी पैलेट, हार्ड पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है वो बनता है. इससे जो 4 इंसाइजर्स हैं उनको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं. फिल्ट्रम ऑफ द लिप बनता है. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट. नाम इंटरमैक्सिलरी क्यों है? बिकॉज देयर इज अ मैक्सिलरी प्रोसेस एंड अ मैक्सिलरी प्रोसेस, और ये जब आपस में मूव करके यहाँ आपस में कंबाइन हो जाएंगे, देन दिस इज नोन एज द इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से एक्सटर्नली यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाता है, इंटरनली भी. ये देखें हार्ड पैलेट का ये वाला जो पोर्शन है ये इसी से बन रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 मैक्सिलरी प्रोसेसेस. अगर इन मैक्सिलरी प्रोसेसेस की मूवमेंट एबनॉर्मल होगी तो ये पोर्शन नहीं बनेगा, इंसाइसर टीथ का मसला होगा, फिल्ट्रम नहीं होगा, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह में हम ये डिस्कस करेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट. नाउ द सेकेंडरी प्लेट, not the plate, palate is how we call it. Although the primary palate is derived from the intermaxillary segment, यानी palate का, hard palate का जो ये वाला part है, this is known as the primary palate, और जो पीछे वाला part है that is the secondary palate.
Okay, now the secondary palate के बारे में हम ये देख रहे थे कि the main part of the definitive palate is formed by two shelf life like outgrowths from the maxillary prominences. So this is also formed from the maxillary prominence. These outgrowths, the palatine shelves, appear in the 6th week of development and directed obliquely downward on each side of the tongue. In the 7th week, however, the palatine shelves ascend to retain the horizontal position just above the tongue and fuse and form the secondary palate. So ये जो पूरा आपका hard palate है, it starts forming 7th week पर ये इस तरह से fuse हो जाते हैं दोनों साइड से, और both these processes are actually derived from the maxillary process. देखें maxillary process है, यहाँ से इस तरह process निकलेगा, यहाँ से इस तरह process निकलेगा, ये shelf life structure मिल जाएंगे और ये पीछे secondary palate बन जाएगा. Okay. Nasal anteriorly the shelf fuses with the triangular primary palate, and the incisive foramen in the midline is the landmark between the primary and the secondary palate. At the same time the palatine shelf fuse, the nasal septum grows down and joins the cephalic aspect of the newly formed plate. So ये देखो डायग्राम में ना यहाँ पे हार्ड पैलेट दिखाया हुआ है. सो ट्राई टू इमेजिन कि ये वाला जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट, और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द शेल्फ लाइक प्रोसेसेस फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होने चाहिए. और अगर मैं इसको साइड वाइज बनाऊं तो ऊपर से नेजल सेप्टम भी, अगर हार्ड पैलेट है तो इस हार्ड पैलेट पे ऊपर से नेजल सेप्टम आके फिक्स होता है. दिस इज व्हाट दे आर मेंशनिंग हियर कि एट द सेम टाइम एज द पैलेटाइन शेल्व्स आर फ्यूजिंग, द नेजल सेप्टम ग्रोज डाउन एंड जॉइन द सेफलिक एंड ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पैलेट. सो अगर ये न्यूली फॉर्म पैलेट है, मैं साइड व्यू देख रहा हूं, तो ऊपर से नेजल सेप्टम आके इस पर लग जाएगा टुवर्ड्स द सेफलिक एंड ऑफ द पैलेट. ओके. Now the nasal cavities. During the 6th week of development, the nasal pits deepen considerably, partly because of growth of the surrounding nasal prominences and partly because of their penetration in the underlying mesenchyme. At first, the oronasal membrane separates the pit from the primitive oral cavity by way of the newly formed foramina, the primitive cornea. These cornea lie on each side of the midline and immediately behind the primary palate. Later, the formation of the secondary palate and further development of the primitive nasal chamber, there is a definitive cornea formation which lie at the junction of the nasal cavity, and also the paranasal sinuses develop in the nearby bones such as ethmoid, frontal, sphenoid and maxilla. So basically जो nasal cavity की formation है, it is deepening of the invagination of the nasal pit. ये जो nasal pit बनी थी in the nasal placard, ये nasal pit deep होती है, and further growth and development the nasal cavity proper is developed. Okay, development of face से related, this is an important table because यहाँ जो face में मैंने आपको बताया कि there are different prominences which are contributing to the development of face. हर prominence से क्या structure develop होता है वो यहाँ इस table पे listed है. So for example, the frontonasal prominence give rise to forehead, bridge of the nose, medial and lateral nasal prominences. Maxillary prominence of the embryo gave rise to cheek and the lateral portion of the lip. So that's an important table. I would suggest spending some time here so that you remember actually what the table is talking about. With reference to face development, there are so many clinical abnormalities which have been reported. So for example, facial clefts, cleft lip and cleft palate, they are very common defects. They are actually common defects that result in abnormal facial appearance as well as difficulties in speech. The incisive foramen is considered the dividing landmark between the anterior and the posterior cleft deformities. Those anterior to the incisive foramina include the lateral cleft lip, cleft upper jaw, and cleft between the primary and the secondary palate. So this is the incisive foramen, right? इससे आगे के जो defects हैं वो इन categories के हैं, और such defects are due to partial or complete lack of fusion of the maxillary prominence with the medial nasal prominence, one or both sides. So obviously ये वो जगह है incisive foramen से आगे जहाँ पे nasal septum भी आकर के fuse कर रहा है in the intermaxillary structure of the hard palate. So अगर इसमें कोई problem होगी, so these three defects, and those defects which lie posterior to the incisive foramina are they include secondary palate or the cleft palate or cleft uvula. Cleft palate results from a lack of fusion of these
shelf-like processes, as we discussed, the palatine shelves. अगर ये सही से आपस में fuse नहीं करेंगे, imagine these are the shelf-like processes from the maxillary processes. तो ये midline में आपस में fuse करते हैं, तो एक complete hard palate बनता है. लेकिन अगर ये fuse नहीं करेंगे, तो there will be a gap. This is what we call the cleft palate. फिर इसकी कई varieties होती हैं. There are different categories of cleft palate that we can discuss when we are doing the surgical lecture. So for now, that suffice that you should know that face formation can have, you see, there is gap there, which means the processes and the prominences, they have not opposed to each other in a proper fashion, जिसकी वजह से इनमें fusion नहीं हुआ और gap रह गया. You see, all these will have severe इनको dietary problem होगा, feeding problem होगा, speech का problem होगा, respiratory problem हो सकते हैं. So this is another diagram showing a variant of cleft lip, जिसमें lip का formation complete नहीं है, and it is going way up till the abnormal nasal pit and nasal prominence formation. So there are different flavors of cleft palate and cleft lip. But anyways, this is to tell you that these defects are common. Now we are left with the discussion about the embryogenesis of teeth. Teeth की जो development है, it is a very good example of epithelial mesenchymal transition. ये word हम बार बार use कर रहे होते हैं in embryogenesis, and teeth is a very good example because if you look at this diagram, let me take you directly to a very relevant diagram. Let me find where is this diagram. ये वाली diagram. So यहाँ देखें, what we are looking at is there is an epithelial lining which is the oral epithelium, और इस lining के नीचे यहाँ पर what we have is the mesenchymal tissue. और ये जो mesenchymal tissue है, ये particularly derived है from the neural crest cell because we are discussing teeth development. So there are two components for development of teeth. One component is the epithelial component and the other component is the mesenchymal component. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि epithelial component कहाँ से आता है जो contribute करता है teeth development की. तो epithelial component is contributed by the oral epithelium. So oral epithelium is the epithelial lining जो teeth development में help करेगा. And then there is a mesenchymal component which is contributed by the neural crest cells. तो ये देखें किस तरह से oral epithelium जो है वो first stage में invaginate करती है, और इस invagination को हम कहते हैं dental bud formation, और surrounding mesenchyme मौजूद है. तो ये जो mesenchyme है, it is actually induced by the epithelial bud to have some changes. So this is what we call the epithelial mesenchymal transition or induction. तो epithelial bud जो बनी है उससे mesenchyme induce होगा, bud की भी growth होगी. So bud is growing देखें, और उससे फिर multiple buds और निकल रही हैं, tooth buds निकल रही हैं. So there is a temporary bud जिसे हम जो it will give rise to deciduous or milk teeth, but we also have permanent tooth bud जो बाद में permanent teeth उससे निकलेंगे. So anyways, there is invagination of the epithelium, and then the surrounding neural crest जो cells हैं, यानी जो mesenchyme है, it will also have some structural changes and form dental papilla, for example. With further growth, what happens, the epithelial connection with the oral epithelium is lost, and now what we see is this structure where there is an external epithelial layer, internal epithelial layer, in the middle there is stellate reticulum. और आप ये देखें जो mesenchyme था उसमें भी development हुई है, it starts giving rise to odontoblast, and now the dental pulp proper is being formed, also the dentine. So ये dentine, dental pulp, यहाँ blood vessels and connective tissue, all these are derivatives from the mesenchyme. जबकि ये जो ऊपर के structures हैं, they are all derived from the epithelium, जिसमें enamel बन जाएगा because ये जो external covering है, it will form the enamel. And with further growth in this structure, this will be the tooth coming up, which we see, and the rest of the structure will be the root of the teeth. So ये जो सारा development है, you see this diagram here. So now you can imagine ये enamel was actually produced by the epithelial lining, dentin and the pulp and every cementum and the surrounding bone, all these are formed by the mesenchymal tissue, and then you see the enamel above the level of the epithelial lining, and you see this as your teeth. ये जो आपको सफेद चमकदार दांत दिखते हैं वो basically ये enamel का part है, but there is a lot more inside as well. It's just like the iceberg. There is a tip of the iceberg, and then there is an iceberg which is submerged in the water. It reminds me of Titanic. So anyways, to summarize,
आसान करने के लिए टीथ की डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एपिथेलियल कंट्रीब्यूशन एंड मेसेनकाइमल कंट्रीब्यूशन. एपिथेलियल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द ओरल एपिथेलियम. मेसेनकाइमल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. एपिथेलियल फ्रॉम द ओरल एपिथेलियम इट इन्वेजिनेट्स एज डेंटल बड एंड देन इट डेवलप्स इनटू ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वेयर वी हैव द outer epithelial lining, inner epithelial lining, enamel starts forming, all these things developed by the epithelium. और जो connective tissue था यानी जो mesenchymal tissue था, it gives rise to pulp and the connective tissue structures and the bony structure in which the root of the teeth is fixed. Okay? अब ये सारी कहानी यहाँ लिखी हुई भी है, उसको देख भी लेते हैं, क्विकली इसको पढ़ लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं. ओके? किधर गया भाई? बहुत सारी डायग्राम्स आ गई. Now shape of the face is determined not only by expansion of the paranasal sinuses but also by growth of the mandible and the maxilla and appearance of the teeth. तो basically जो आपका facial appearance है, it is also dependent in large quantity I would say because of the teeth. आप देखें जिसके दांत नहीं होते यानी old age में when you lose your teeth the facial appearance actually change. Okay, so teeth are important contributory factors to the shape you have in your face. Teeth themselves arise from an epithelial mesenchymal interaction. ये बात हम कर चुके हैं. हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डेंटल बड्स बनती हैं एंड किस तरह से there is an outer dental epithelium, inner dental epithelium और mesenchyme जो है derived from the neural crest cells make the dental papilla. So basically ये सारा पैराग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. अब इसके डिफरेंट स्टेजेस जरूर हैं. There is a cap stage, there is a bud stage, but they are not important for you to remember actually. You should have the basic idea what's happening. Mesenchyme of these cells, odontoblast and dentin, ये सब pulp का बनना, all these things are being produced by the mesenchymal part of the tooth. Okay, then we have cementoblast and cementum and periodontoblast. ये सब चीजें भी mesenchyme से बन रही हैं. They are not epithelial in origin. लेकिन जो enamel बनेगा, that enamel will be made या dental cuticle जो बनेगा, that is made by, let me see, इन्होंने कहा enamel का जिक्र किया होगा यार. So the enamel is enamel formers. Yeah, so enamel is made by the epithelial component. So there are structure in teeth which are formed from epithelium. There are structures of teeth which are formed by the connective tissue. Now birds for the permanent teeth, पहले तो परमानेंट टीथ से जो टीथ आते हैं वो क्या होते हैं? डेसिडुअर या मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसे कहते हैं. इसका टाइमलाइन है 6 to 24 months. लेकिन उसके बाद वी ऑल्सो हैव द बर्ड्स फॉर द परमानेंट टीथ विच आफ्टर अ टाइम दे स्टार्ट ग्रोथ और फिर वो जब ग्रो करती हैं फ्रॉम द 3rd month ऑफ द डेवलपमेंट दे से कि ये बर्ड अपेयर हो चुकी भी होती हैं, बट इनकी जो ग्रोथ है लेटर ऑन इन द लाइफ, दे इन द पोस्ट नेटल लाइफ, 6th year of the post natal life, they start pushing the deciduous teeth और deciduous teeth basically गिर जाते हैं and then they are replaced by the permanent teeth. ये डायग्राम देखें जरा. So this for example is the permanent teeth. ये इसको पुश करेगा, ये गिर जाएगा and this will be in place. That sort of story, Right. So now we have to talk about the molecular regulation of teeth development. So we know some details about the molecular regulation of teeth development. पहली तो बात ये है कि teeth are present only in the vertebrates and parallel the evolutionary appearance of the neural crest. So neural crest जैसे जैसे appear होता गया, teeth की appearance मिलती गई हमें. ठीक है. Tooth development represents a classic example of an epithelial mesenchymal interaction. So there is an epithelium, there is a mesenchyme. इनकी आपस में interaction से structures बनते हैं. So tooth में भी ऐसे ही है, epithelial structure, mesenchymal structure और फिर इससे proper tooth बन जाता है. So in the tooth we see there is an epithelial component and then there is a mesenchymal component. ठीक है. In this case between the overlying epithelium and the underlying neural crest derived mesenchyme. So एक तरफ से there will be epithelium और दूसरी तरफ से यहाँ जो mesenchyme है that is derived from the neural crest. Regulation of tooth patterning from incisors to molars is generated by a combinatorial expression of Hox genes expressed in the mesenchyme. With respect to each tooth individual development, the epithelium governs differentiation to the bud stage, at which time this regulatory function is transferred to the mesenchyme. Signals for development involve growth factors including Wnt pathway, BMPs, FGFs, fibroblast growth factors, and secreted sonic Hodgkin pathway. Also, the transcription
receptor factors such as MX1, MX2 that interact in a complex pathway which is largely unknown, by the way, to produce cell differentiation and patterning, right? For E2. अब आप देखें ना, हर दांत का डिज़ाइन अलग है, इंसाइजर्स जो हैं वो अलग हैं, उनका फंक्शन अलग है, कैनाइन नोकीला है, उसका काम अलग है, फिर मोलर, प्रीमोलर, सबके डिज़ाइन अलग अलग हैं. तो ऐसा माना जाता है कि इन जीन्स की एक्सप्रेशन डिफरेंट होती हैं, जिनकी वजह से इनकी शेप, इनकी डेवलपमेंट, इनके स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी सब डिफरेंट होता है. बट अनफॉर्चुनेटली, या आपके लिए फॉर्चुनेटली, क्योंकि याद नहीं रखना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स पता नहीं है. टीथ ऑल्सो अपीयर टू हैव अ सिग्नलिंग सेंटर दैट represent the organizer for tooth development, much like the activity of the node during gastrulation. This organization region is known as enamel knot. That's a theory, and it appears in a circumscribed region of the dental epithelium at the tip of the tooth bud. So that's what is believed, that there is an enamel knot formation which perhaps control the process of development of teeth. But again, we don't know with clarity कि ये exactly होता कैसे है. Now it then enlarges, the enamel knot enlarges at the cap stage into tightly packaged group of cells, but it undergoes apoptosis and disappears by the end of this stage. While it is present, it expresses FGF4, sonic hedgehog, BMP2, as well as 4. FGF4 may regulate outgrowth of the cusps, much as it participates in the limb growth produced by the apical ectodermal ridge. So these are all theories that we think happens. Exactly what happens, we don't know. In my personal opinion and experience, I think the explanation for development of teeth at the molecular level is obviously much more complex than what is written here. यहाँ तो सिर्फ है कि शायद ये जीन एक्सप्रेस होती है, ये जीन एक्सप्रेस होती है, शायद ऐसा होता है. But obviously इतना beautiful system है. You have like इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के टीथ आपके पास हैं, अलग अलग काम हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, अलग अलग उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली उसका जो डेवलपमेंटल कंट्रोल होगा, जो एम्ब्रियो जेनेटिक कंट्रोल होगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग का, वो ऑब्वियसली सबका डिफरेंट होगा. द पॉइंट इज वी जस्ट डोंट नो दिस इन फाइन डिटेल. हमें फाइन डिटेल में पता नहीं है. ये एम्ब्रियोलॉजी की जो फील्ड है, मैं कहता हूँ कि इट इज़ बाय एंड लार्ज स्टिल वी आर इन डार्क. हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि हाउ द ब्यूटिफुल ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली डेवलप्ड. Anyways, we discuss what we know. Kuch clinical correlate tooth abnormality. Natal teeth have erupted by the time of birth. Usually they involve the mandibular incisors, which may be normally formed and have little enamel. So that's an abnormality. But anyways, in normal बच्चा दांत के साथ पैदा नहीं होता, आपको पता है. Teeth may be abnormal in number, shape and size. They may be discolored by foreign substances such as tetracycline can stain the teeth, or if somebody is deficient in enamel, for example, which is the outer covering, a condition caused by vitamin D deficiency or rickets. So there are so many diseases in which you see problems in the morphology of teeth. और यहाँ पे तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, but I'm sure जब हम पैथोलॉजी मेडिसिन डिस्कस कर रहे होंगे उन वीडियोस में ये बात डिटेल में डिस्कस होगी. So that's all about this chapter. It was a long chapter but important chapter for your examination. So all the very best, and I hope you liked the video. If you did, please share with colleagues and subscribe the channel. I'll see you in another video very soon. Take care of yourself.